Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap, in which we are going to discuss the top 50 MCQs from the month of January 2022. But before beginning this session, guys, I want all of you to give a thumbs up in the comment section if I'm audible and visible to all of you. So guys, please give me a thumbs up in the comment section. So I'm getting some responses here from the students. So guys, first of all, a very happy new year to all of you. And guys, when I talk about the today's session, today we are going to discuss the top 50 MCQs from the month of January 2022, and this is the part 1 of this particular month. ठीक है, जिसके अंदर I will be discussing the general awareness MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A and SEBI Grade A. So good morning Pooja. I really believe that guys, all of you are really preparing well for upcoming exams. So when I talk about this particular exam, see this exam, this particular session guys, when I talk about this session, in this session I am going to discuss the top 50 MCQs and we are going to revise everything that we have covered in the first week of the January through the fast track sessions. तो ये एक session revision session होने वाला है, and that's why all of you are required to give your answers in the comment section whatever you think that the right answer to the questions is. So good morning Vishal. So the students are joining in, let's wait for them as well. But before beginning this session, let me tell you a very important announcement that we at EduTap have launched the comprehensive guidebooks for the aspirants of the RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. And guys, when I talk about these guidebooks, what is exactly the speciality of these guidebooks? See, that is, these guidebooks are going to provide the definitive answers to all your queries that basically pops up in your mind as an aspirant. It can be about the body, it can be about the exam, it can be about how to prepare for this exam. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so what exactly is the role of RBI in the Indian economy? Now when I talk about the exam, what is the eligibility criteria, what is the pattern, what is exactly the age criteria, so what is exactly the detailed syllabus, so everything such kind of questions are being, the answers to these kind of questions are being given to you in one stop solution, that is these guidebooks. Now when I talk about the preparation for this exam, so what exactly are the resources that you must follow in order to clear this exam? So these are the things that these particular guidebooks are really going to give you the definitive answers guys. And as an aspirant, the three important things, that is time, energy and effort, that these are the very most important thing as an aspirant for you. And what you can do, you can just download this particular guidebook, you can just acquire the important information and just give and employ your time, energy and effort in the right direction. So what are you waiting for? Kindly download these particular books from the link given in the description of this video. Now coming back to the question number 1, so here is the very first question to all of you, which is here on the screen. And guys, here the question is, you are required to tell me the name of the state government which has approved rupees 367.19 crore for the empowerment of women in agriculture. So guys, let me see that who will tell me the right answer. Good morning Vishal, good morning Pooja, good morning Nilesh. So guys, here's the very first question on the screen, so do let me know what is the right answer. So guys, let me tell you that this session is going to be a rapid fire session, so sabhi ko answers karne hai comment section ke andar, that is mandatory for all of you, but you have to make sure that your speed for answering the questions is very high, because agar hum baat kare RBI ke exam ki bhi, to wahan pe aapko 25 minutes ke andar 80 questions ko answer karna hai, theek hai. So here is the very first question, and when I talk about the right answer, guys, the right answer is option D, that is Odisha. As you can see that Odisha government has recently approved a provision of 367.19 crores. और ये किसके लिए किया गया है? They are basically launching a state sector scheme, and the name of that scheme is Empowerment of Women in Agriculture, Promotion of Entrepreneurship for Women Self-Help Groups, and the tenure of this particular scheme is from 2022-2023 to 2026-2027. And now when I talk about this particular scheme, guys, this scheme is having a goal of doubling the mushroom production across the whole state, and that is why this particular scheme has been launched. Let me see who has answered the right question. So Vishal and Nilesh have given option B and D. So Nilesh has given the right answer, that is option D, that is the right answer to this question, that is Odisha. So guys, apart from this, there is one more important point, that at the end of the session you are also required to tell me that how many questions you have marked right out of these 50 questions that I have brought here in this particular session. ठीक है जी? So here the next question. So here you are required to tell me the name of the organization जिसने rank किया है WAPCOS को, which is amongst a top consulting services firm in water and
other infrastructure sectors. तो वैपकॉस एक कंपनी है, एक कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि वाटर और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के ऊपर कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सी गाइज, let me give you a small hint about this particular part, that this particular organization is having its headquarter in Manila, Philippines, and the president of this particular organization is Masatsugu Asakawa. Now I think that life will be easier for you to answer this question. So I'm getting the right answers. Absolutely right. Bruce Wayne, Nilesh, everybody is giving the option B as the right answer. Absolutely right. It is Asian Development Bank. That is the right answer. When I talk about the WAPCOS, it stands for Water and Power Consultancy Services Limited, which is the Government of India enterprise under the Ministry of Jal Shakti. It was established in 1969. Okay, so all the important information we have covered. Absolutely right, Bhavani. It is ADB. Now moving on to the next question. So Ministry of Tribal Affairs has partnered with Dash for Future Engineer Program. See guys, Future Engineer Program इस particular company का है और Ministry of Tribal Affairs ने यहाँ पर उसके साथ partnership की है. Whenever there is a partnership, we always tell you that there are two important things. First one is what is exactly the aim of this particular partnership, and the second thing is the name of the party जिसके बीच में ये पार्टनरशिप हुई है. So one of the parties is the Ministry of Tribal Affairs. Second party का नाम आपको मुझे बताना है in the comment section के अंदर. And guys, when I talk about the right answer to this question, absolutely right, it is option D, that is Amazon. So question number 3, the right answer is option D, that is Amazon. और मैं आपको बता दूं यहाँ पर NEST, that is the National Education Society for Tribal Students, उन्होंने एक यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया है EMRS टीचर्स के लिए टू इम्प्लीमेंट अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम. बेसिकली EMRS स्टैंड्स फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. और जब हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं तो उनको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इससे उनका एक स्किल सेट भी डेवलप होगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट EMRS गाइस, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. EMRS स्कीम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं बहुत ही ब्रीफली. तो व्हेन आई टॉक अबाउट EMRS स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड इन 1997-98. When I talk about the nodal ministry, so it is basically once again under the Ministry of Tribal Affairs. ठीक है जी. और इसका aim क्या है? That is to provide accessibility to the quality education. Quality education provide करना to the students who are residing in the tribal areas. और ये भी tribal areas वो blocks हैं जहाँ पर tribal population जो है, see scheduled tribes की population is more than 50% and at least 20,000 tribal persons are living in that particular area, and that is what is the right answer to this question. And all these such kind of details are really very important for you to remember from the exam point of view. So I hope that this is clear to all of you, and most of the people have given the right answer. Absolutely right. Now moving on to the next question. The next question is on TRAI. So TRAI ने recently recommend किया है that the renewal of registration of multi-system operators who are master cable operators should be done for dash years. तो basically जो हमारे multi-system operators हैं उनको यहाँ पर उन्होंने recommend किया है renewal of registration of these MSOs. और आपको ये बताना है कि basically कितने साल के लिए किया गया है. That is what the question is all about. So guys, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्राई की, तो whenever you find such kind of organizations in the news, you are always required to remember that उनके जो हेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम क्या है. फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट ट्राई, तो ट्राई की जो चेयरमैन है ही इज बेसिकली डॉक्टर PD वाघेला. ठीक है जी. Or when I talk about the right answer, and people are saying that the right answer is 15 years, some people are saying that it is 10 years, but here guys the right answer is option C, that is 10 years. So all the people जिन्होंने right answer किया है C, that is absolutely right, that is 10 years. So MSOs की आप यहाँ पर full form देख सकते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे सामने दिया गया है. full form है multi system operators. They are the large cable operators that provide the cable or direct broadcast satellite television channel. See guys, आप सबको पता होगा कि आप सबके घरों में केबल टीवीज होते थे. एक टाइम पे केबल आता था, केबल का वायर आता था, तो वो उनको जो ऑपरेट करते हैं they are basically the multi system operators. Okay, now the next question here on the screen, and the question is which of the following institutes will serve as the secretariat for Science 21 of the G20's multiple groupings. ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि G20 की जो मल्टीपल ग्रुपिंग है दैट इज साइंस 20, उसका सेक्रेटेरिएट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्ले करने वाला है. इज इट IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास, NIT सिलचर और IIT कानपुर. See guys, we all know that अभी दिसंबर के अंदर G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो मिली है इंडिया को. ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया के लिए जो G20 प्रेसिडेंसी की थीम है, इट वाज बेसिकली वासुदेव कुटुंबकम. दैट मींस
one earth, one family and one future. So that was basically the theme. और जब हम बात करते हैं G20 की, it is basically comprising of 19 countries and European Union. So basically there are 20 entities in that. And when I talk about the right answer, absolutely right. The right answer to the question number 5 is option A, ISC Bengaluru. So ISC Bengaluru is the right answer to this question. Let's move on to the next question. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है, और ये question काफी important है guys, because the question is Kerala's dash has become the first complete library constituency in India. Basically, pehli library constituency, first complete library constituency. That means in each of its ward there is a library, and such kind of achievement has been attained by which one of the following districts? That is what you are required to tell me here in this particular question. Question number 6. What is the right answer? So people are opting the option number B as the right answer. That is Dharmadam. Absolutely right. It is the right answer. So guys, it has become the only constituency in India to have a library in all the wards. और जब भी ऐसी चीजें आती हैं guys, ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन आती है when there is a first, largest, smallest, highest, तो ऐसे वर्ड्स को हमेशा एग्जामिनर भी अट्रैक्ट होता है इन वर्ड से, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आते हैं. तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि आई एम मार्किंग दिस एज अ स्टार क्वेश्चन बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर इज दिस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो IRDAI ने रिसेंटली मैंडेट किया है दैट जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं मस्ट प्रोवाइड देयर KYC डिटेल्स व्हेन परचेजिंग एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सी गाइस, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जब भी कोई हमारे यहाँ पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा तो उसको KYC डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. अब ये कौन सी डेट से एप्लीकेबल होगा ये रूल, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी हियर. तो ऐसे कभी भी जब माइलस्टोन डिक्लेरेशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें याद रखना होता है कि कौन सी यहाँ पर डेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी डेट से बेसिकली एप्लीकेबल होने वाला है, कितने टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल होने वाला है. यहाँ पर क्वेश्चन है डेट के ऊपर, एंड द राइट आंसर इज जनवरी 1 2023, जब से बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइज. एब्सोल्युटली राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन. Question number 8. Recently, to deepen the health insurance in the rural areas, which of the following insurance companies has joined hands with the non-banking lender Swara Fincare in order to pay 3 EMIs of the borrowers in case they are hospitalized for over 5 days? तो एक तरीके की स्कीम लॉन्च ही है यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, और आपको बताना है कि वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बेसिकली इसको लॉन्च किया है. ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने एम एकदम क्लियर है, दैट इज टू डीपन हेल्थ इंश्योरेंस इन द रूरल एरियाज, एंड दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. और आपको बताना है कि क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. इज इट स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, Niva Bupa Health Insurance, HDFC ERGO, Care Health Insurance, Aditya Birla Health Insurance? And to the question number 8, all the people are opting the answer B as the right answer. That is Niva Bupa Health Insurance, and that is the right answer. So Hershey, Nilesh, Priyanka, all of you have given the right answer. Well done guys. Let's move on to the next question. The next question is here on the screen. G. Kamla Vardhan Rao has taken charge as a CEO of which of the following organizations? तो इसमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका CEO बने हैं जी कमला वर्धन राव? एंड गाइस, दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एग्जाम में आते हैं. द राइट आंसर इज FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Home Minister has launched the mobile app Prahari and a manual of which of the following forces? तो इसमें से वो कौन सी फोर्सेस है जिसके लिए ये ऐप लॉन्च किया है प्रहारी, और उसके मैनुअल्स को यहाँ पर लॉन्च किया है? इज इट SSB, ITBP, CRPF, BSF and CISF? Let me give you a small hint for this particular question. And the hint is that when I talk about the Director General of that particular defense force, it is basically Shri पंकज कुमार. तो यहां पर आई थिंक आपके लिए इजी होगा ये जानना और ये बताना, इस क्वेश्चन का आंसर देना कि इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डीजी हैं श्री पंकज कुमार और जिसके लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है प्रहारी एंड द मैनुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रहारी ऐप the Indian jawans can get personal information. See, personal information और जो हमारे accommodation से related information होती है, because it is a very important part of the job. तो accommodation उनको कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगा, तो ये सब चीज़ों की जानकारी, आयुष्मान CAPF एक चीज़ है, तो ये सब जानकारी उनको उनके सीधा मोबाइल पे मिल सकती है with the help of this Prahari app, and that is what the right answer to this question. Now the next question for all the football lovers, and that is
Pele, the World Cup winner and the football legend, has died at the age of 82. और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री को पेले रिप्रेजेंट करते थे, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. व्हेन आई टॉक अबाउट पेले गाइस, इट वाज रियली awesome player and he was the only player to lift फीफा वर्ल्ड कप. सी गाइस, फीफा वर्ल्ड कप को 3 टाइम्स लिफ्ट करने वाले एक इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने लिफ्ट किया था इसे 1958, 62 और 1970 के अंदर. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी, दैट इज ब्राजील. तो यहां पर नीलेश, शाश्वत, हर्षी, कौशिक एंड ब्रूस विन, एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन सी, ब्राजील. वेल डन गाइस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated the new Zuari Bridge in which of the following states? So this is one of the off-track questions that can surprise you in the exam, और जिससे आप सरप्राइज ना हो उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को यहीं पर पुट कर दिया है और आपको मुझे बताना है कि जो जुआरी ब्रिज को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है ये कहां पर है. एंड गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गोवा. So Goa is the right answer to the question number 12. Now the next question. Art Park IISc has joined hands with Dash to launch AI powered project Vani. See guys, project Vani एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. इसके अंदर क्या करने वाली है ये ऑर्गेनाइजेशन? दे आर बेसिकली गोइंग टू गैदर द स्पीच डेटा. सी, स्पीच डेटा को ये गैदर करने वाले हैं अक्रॉस इंडिया, जिसकी हेल्प से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पीच मॉडल को क्रिएट किया जाए, जिसके अंदर अगर हम जो कि अंडरस्टैंड कर पाएगा डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस को, डायलेक्ट्स को. एंड दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च, सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च, जिसका नाम है वानी. और हम जब बात करते हैं इस वानी की, तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां पर मिलकर लॉन्च किया गया है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज Google. So Google is the right answer to the question number 13. Now moving on to the next question. The government has approved the Padma as a self-regulatory body for Dash across the country. Let me tell you. Let me give you a hint that this particular Padma organization has become a self-regulatory body. See, regulatory, ये self-regulatory body बनी है. इसके अंदर basically 47 to 48 publishing houses के बोर्ड मेंबर्स हैं और इसके बोर्ड के पार्ट हैं. एंड तो ये क्या करने वाला है? बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पब्लिशर्स ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स. जो भी ग्रीवेंसेस आते हैं आपके ऑनलाइन कंटेंट पे अबाउट दीज न्यूज एंड व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड देयर, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रीवेंसेस आता है तो इट कैन बी फाइल्ड इन पद्मा. एंड दिस इज द बॉडी व्हिच इज रियली गोइंग टू बेसिकली this body is going to regulate this particular part. ठीक है जी, I hope this is clear guys. Let's move on to the next question. For the first time in history, the funding for tuberculosis research and development has hit $1 billion. See guys, एक very important part that recently एक report release हुई है, that is the tuberculosis research funding trends 2005 to 2021. और इस रिपोर्ट ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही है कि जो हमारी टीबी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग है उसने क्रॉस किया है $1 बिलियन. ठीक है, बट स्टिल वी आर बेसिकली वे बिफोर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स दैट वी हैव टारगेटेड. और जब हम बात करते हैं गोल्स की, तो हम सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वी आर बेसिकली टारगेटिंग टू एलिमिनेट द टीबी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय ईयर 2030. ठीक है, और गाइस जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के रिलीजिंग बॉडी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए. एब्सोल्युटली राइट टू द क्वेश्चन नंबर 15. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन ग्रुप, TAG एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप. और अब आप सभी के सामने एक गूगली क्वेश्चन ये आता है कि आपको मुझे बताना है कि इंडिया का क्या टारगेट है. See, I have told you that the world basically aims to achieve the sustainable development goal of eliminating the TB by 2030. So by which year? By which year India is aiming to eliminate the TB from India? So let me see that who will tell me the right answer. You are required to tell me the year by which Indian government is targeting to eliminate TB from the India. So let me see who will tell me the right answer. Absolutely right. All the people are saying that it is 2025. That is 5 years before the world is going to achieve it. That is, India will be achieving the same by year 2025, and that is what Indian government is targeting, and I really believe that we are really going to achieve this particular goal as well. Now moving on to the next question guys. The next question is, government of India has introduced new integrated food security scheme. See guys, फूड सिक्योरिटी स्कीम यहां पर एक नई लॉन्च की गई है, और ये जो नई स्कीम है, इट विल बी प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर NFSA फॉर व्हाट पीरियड? लेट मी टेल यू दैट इट इज अ NFSA Act 2013. ठीक है जी,
अब आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर बेसिकली कौन से ईयर के लिए, किस टाइमलाइन के लिए फ्री फूड ग्रेन्स इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लॉन्च करने वाले हैं. ओके, absolutely. So Nilesh is saying that TB हारेगा देश जीतेगा. Absolutely Nilesh, you are absolutely right. So now when I talk about this particular part, see guys, this particular scheme has been launched और ये जो scheme है, this is a new सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक है, और ये इससे क्या करने वाला है, इट इज बेसिकली हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव द फुल विजन ऑफ वन नेशन वन प्राइस एंड वन राशन. ठीक है, और यहां पर हम बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाएंगे टू ऑल द एनएफएसए बेनिफिशियरीज. और यहां पर आपके अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करें, इट विल बी अंत्योदय अन्ना योजना हाउस होल्ड्स एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, जिनको फ्री फूड ग्रेन्स मिलने वाले हैं. नाउ आई रियली बिलीव दैट यू ऑल हैव गॉट द राइट आंसर. एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन ई, दैट इज फॉर द होल 2023. सो ऑल द पीपल हु आर गिविंग द राइट आंसर ई, they are absolutely right. So Priya, Nilesh, Piyush, Hershey, Bruce, everybody has given the right answer. That is option E for the whole 2023, for which this particular scheme will be providing the free food grains to the 81.35 crore people. Now the next question on the screen. Here, one of the challenges has been launched, which is going to invite ideas, solutions, and actions to transform rural economy. And this has been launched under the DNRLM, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, under the Ministry of Rural Development. See guys, whenever you see such kind of schemes in the news, तो आपको उस स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए. आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि यार क्या मुझे इस स्कीम का लॉन्च ईयर पता है, क्या मुझे पता है कि इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री क्या है, क्या मुझे इसके टारगेट्स पता है, क्या मुझे इसके बेनिफिशियरीज पता है. तो जब भी आप अपने आप से क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट विल बेसिकली हिट यू टू go out and seek the answers regarding to that question, and that is what you must approach. You must adopt this kind of approach in order to ace this particular exam. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं guys NRLM की, that is National Rural Livelihood Mission, तो it was launched in year 2011 under the Ministry of Rural Development, which is basically the nodal ministry for the DNRLM scheme. ठीक है, और इस बात की बात करें तो भाई ये जो स्कीम है, this is a centrally sponsored scheme. ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. क्या इसका एम है, दैट इज टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी, एंड हाउ इट विल बी हैपन बेसिकली बाय प्रोवाइडिंग द रूरल पुअर हाउस होल्ड्स, helping them in gaining the self employment. ठीक है, so that is what this particular scheme is all about. And when I talk about the right answer, it is absolutely option A, that is Prajwala. So Prajwala is the right answer. Bruce, Piyush, Priya, everybody has given the right answer. That is option A. Prajwala is the right answer. Now the next question. So here you are going to tell me the name of the country which has joined Schengen zone and switched to euro. तो ये वो country है जिसने recently अपनी official जो उसकी currency थी earlier, that is kuna, पहले उसकी करेंसी थी कूना, उसने उसको स्विच करके किया है यूरो, और ये शेंजन जोन के अंदर बेसिकली इसने एंटर किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर country? That is what you are required to tell me here. So guys, when I talk about the right answer, it is basically option D, that is Croatia. जी हाँ, Croatia is the right answer, and Croatia has become the 27th member of the passport free Schengen zone. See, जो ये Schengen zone है, it basically allows the 400 million people to basically travel in all such kind of nations which are under this particular zone without any need of requirement of the passport. That is what it is all about. Absolutely. So Saif Ali, Muskan, Priyanka, everybody has given the right answer. That is option D, Croatia. Well done guys. Now moving on to the next question. According to the RBI's 26th issue of financial stability report, current account deficit has widened to % of the GDP in Q2 fiscal year 2023. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कितना इंडिया का current account deficit है in terms of the percentage of GDP. So I really believe that आप सबको पता होगा कि current account deficit क्या होता है. See guys, current account deficit, that is CAD, basically occurs when the value of the goods and services that the country is importing, from outside the world, when it exceeds the amount of the value of the goods and services that it is exporting. This is the situation when the current account deficit basically happens. And when I talk about the right answer to this question, it is option D, that is 4.4%. Now the next question. So which of the following state has signed a 2275 crore agreement with the ADB for a power project? तो यहाँ पर आपको दो पार्टीज है जिसके बीच में ये MOU हुआ है, पार्टनरशिप हुई है फॉर अ लोन अग्रीमेंट. अमाउंट है 2275 करोड़ का. दूसरी जो
ऑर्गेनाइजेशन है जो देने वाली है अमाउंट, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. व्हाट इज द एम, दैट इज फॉर अ पावर प्रोजेक्ट. दिस पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन साइन. तो कौन सी स्टेट है जिसने बेसिकली इसको साइन किया है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. एब्सोल्युटली राइट. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन सी, दैट इज त्रिपुरा, एंड ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज constituted a high powered committee to ensure protection of land and employment for the people of dash. तो यहां पर मैं आपको बता दूं एक HPC बनाई गई है, दैट इज हाई पावर्ड कमिटी. और बेसिकली क्या उसका एम है, दैट इज टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट. और आपको बताना है कि कहां के लोगों के लिए इस हाई पावर्ड कमिटी को बेसिकली सेटअप किया गया है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लद्दाख. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जब भी ऐसी कोई कमेटी आती है तो उसके जो चेयरपर्सन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करें, दैट दिस पर्टिकुलर कमिटी विल बी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय जी. ठीक है. What is the aim? That is to protect Ladakh's culture, language and employment. Absolutely right. All the people are giving the right answer. That is option D, Ladakh. So I really believe कि आप सभी ने अपने हमारे पिछले हफ्ते के सभी फास्ट सेशंस को बहुत ही अच्छे से देखा है एंड योर प्रिपरेशंस आर रियली गोइंग वेल. सो गाइस, दिस न्यू ईयर पे आप ये रेजोल्यूशन लीजिए कि इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को आगे बनाए रखेंगे और यू आर रियली गोइंग टू एज द एग्जाम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is on the SMART program, and the question is on a very simple line, that is you are required to tell me the full form of SMART. See guys, जब भी ऐसा कोई एक्रोनिम आता है आपको हमेशा याद रखना है कि उसको फुल फॉर्म को याद रखना है. ठीक है. तो SMART program for Ayurved professionals to boost R&D in the Ayurveda in the country has been launched. Basically, to boost the qualitative scientific approach in the Ayurveda, this particular SMART program has been launched. और उसकी full form की बात हो रही है कि full form क्या है उसकी, that is what you are required to tell me. And here guys, the right answer is option B, that is scope for mainstreaming Ayurveda research in the teaching professionals. That is what the right answer is to the SMART program. Absolutely right. All the people has given the right answer. Bruce Wayne or Nilesh have given the right answer. That is option B. Now moving on to the next question. See guys, I told you that this session is basically a rapid fire one. तो आपको अपनी speed increase करनी होगी in order to answer the questions in the comment section. ठीक है. Now the next question, और next question है कि recently Ministry of Finance ने कुछ data launch किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया का external debt अभी एट प्रेजेंट उसकी क्या वैल्यू है इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022-2023. सी बेसिकली इट हैज रिड्यूस्ड by 2.3 billion from end June 2022. तो आपको मुझे बताना है कि what is the present value of the India's external debt. See guys, when I talk about the India's external debt, ठीक है, it is basically the debt which basically India has taken from outside the world. ठीक है. जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन लेंडर से जो भी पैसा हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, that is what comes under the external debt. ठीक है. I hope that this is clear to all of you. It can be borrowed from the foreign lenders, that is including the commercial banks, governments or the international financial institutions. ठीक है. That is what the external debt is all about, and the right answer to this question is option A, that is USD 610.5 billion. That is the right answer. Absolutely right. Priya, Nilesh, Hershey, Priya, Shashwat, everybody is given the right answer. Now the next question here on your screen. So in a first for India's pharmaceutical industry, pharma major Dash has entered into a strategic partnership with the Greenco Group. And why exactly they have collaborated? They have collaborated for the green molecule solutions. तो आपको मुझे जल्दी से बताना है कि क्या है उस फार्मा मेजर का नाम जिसके साथ ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई है, और ये पहली बार हुआ है कि कोई ऐसी पार्टनरशिप हुई है. एंड हियर गाइस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is a very interesting one. The question is from the World Boxing Council, जिन्होंने एक नई कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है from 2023, and what is the aim of that? That is to ensure the safety and inclusion. तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है by the World Boxing Council in year 2023. So here guys, the options are underweight, overweight, transgender, mixed gender and the none of the above. So this is the first time that they have done this part, and absolutely all of you have given the right answer in the comment section. That is option C, transgender category has been launched from 2023. Now the next question. So यहाँ पर आपको मुझे बताना है उस ऑथर का नाम जिसने रिसेंटली बुक को लॉन्च किया है, दैट इज अंबेडकर अलाइव. सी गाइस, यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना होगा, आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या है क्वेश्चन की डिमांड, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर को मार्क करना होगा. ठीक है. सो अंबेडकर अलाइव इस नाम की बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, एब्सोल्युटली इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन वेरी इजिली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट इज
ऑप्शन सी दैट इज शशि थरूर जी, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। एब्सोल्युटली राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पीएनजी नेटवर्क, दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क। ठीक है, तो पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन वाला, इसको लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? सी गाइस, दिस इज व्हाट मेकिंग दिस पर्टिकुलर question a very important question from the exam point of view. So let me tell you the right answer. Absolutely it is option D, that is NTPC. और सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही जवाब। प्रिया, नीलेश, सैफ अली, ब्रूस, everybody is giving the right answer, that is NTPC. Now the next question. Once again guys, there is India's first. See, I am marking all such kind of questions as a star mark because they are really they can be asked in the exam. तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस बेसिकली कहां पर बन रही है, जो कि कंप्लीट हो जाएगी बाय दिसंबर 2023, एंड आई हैव ऑलरेडी आल्सो कवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट in the previous year as well, that is in year 2022, and absolutely right guys, the right answer is option A, that is कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस लॉन्च होने वाली है, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड बाय December 2023। ओके, एब्सोल्युटली राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पर अगर ये जो क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेट मी ब्रीफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की है लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, और यहां पर उन्होंने बेसिकली कहा है कि वो कौन से बैंक है जिसको फर्स्ट बकेट में यहां पर प्लेस किया गया है विद एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ RWA, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। और यहां पर जब हम बात करें कि जो पहली बकेट के अंदर ये बैंक्स होते हैं, इनको 0.2% ऑफ दिस RWA यहां पर कीप रखना होता है, इसको रखना होता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 29? एब्सोल्युटली राइट। सी गाइस, अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स की, दे आर ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर आपकी जो फर्स्ट बकेट में रखा गया है आउट ऑफ सच काइंड ऑफ बैंक्स व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड इन द ऑप्शंस, इट इज ICICI बैंक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहां पर आप देख सकते हो SBI, ICICI और HDFC बैंक हैं हमारे, जो कि DSIPs हैं, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और ICICI बैंक और HDFC बैंक को प्लेस किया है फर्स्ट बकेट में, SBI को प्लेस किया है यहां पर थर्ड बकेट के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज द राइट आंसर गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंडिया एक्सेलरेटर ने पार्टनरशिप की है इसमें से कौन सी एंटिटी के साथ टू फोस्टर अप द स्टार्टअप इकोसिस्टम? स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को फोस्टर करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया एक्सेलरेटर ने पार्टनरशिप की है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अ वेरी इजी क्वेश्चन, and here Annie Thomas, Subhadeep Chakrabarti, Saif Ali, everybody is giving the right answer, that is option D, that is both A and B, ICICI Bank and Infosys Finacle, ठीक है। So this is basically the right answer to this particular question, absolutely right। Now moving on to the next question. So here you are required to tell me the name of the person who has been appointed as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange Limited. तो Bombay Stock Exchange Limited के इसमें से कौन से MD and CEO बने हैं? So guys, let me tell you here that इनसे पहले जो हमारे इनकी CEO थे, that was basically आशीष कुमार चौहान जी, जो कि पहले MD and CEO थे BSE के, but after that he basically decided to join NSE as the MD and CEO of NSE, ठीक है। तो यहां पर आपके दो क्वेश्चंस यहां पर प्रिपेयर हो चुके हैं कि NSE के MD एंड CEO प्रेजेंट कौन है, आशीष कुमार चौहान, और क्वेश्चन में है कि BSE के MD एंड CEO प्रेजेंटली कौन है जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, दैट इज बेसिकली ऑप्शन बी, Sundaram Ramamurthy, that is the right answer to this question. Absolutely right guys. Now the next question. डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज को, इसमें से कौन सी स्टेट या यूटी के अंदर, ये आपको बताना है। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फर्दर डिस्कशंस हियर, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state governments has signed an MOU with worth 18,590 crore with 6 UAE based companies? So let me tell you that ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को आने वाले टाइम में एक पर्टिकुलर स्टेट होस्ट करने वाली है, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने ये पर्टिकुलर पार्ट साइन किया है, 6 यूएई बेस्ड कंपनीज के साथ इस एमओयू को साइन किया है, विच इज रियली गोइंग टू ब्रॉट अराउंड 20,000 employment opportunities for the people living in that particular state. And what is the name of that state? Absolutely right, it is option D, that is उत्तर प्रदेश। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये आपकी होने वाली है लखनऊ के अंदर,
ठीक है, तो यहां पर आपके सामने यहां पर 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके सॉल्व। दैट इज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कौन करने वाला है, दैट इज यूपी होस्ट करने वाला है लखनऊ के अंदर, और 6 यूएई बेस्ड कंपनीज के साथ यहां पर पार्टनरशिप कौन से स्टेट ने की है, दैट इज वंस अगेन उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेज किया है इंटरेस्ट रेट ऑन अ नंबर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स, एंड नाउ द क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मंथली इनकम अकाउंट स्कीम। तो मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के जो रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 7.1%. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट एनीमोर because it do not requires any kind of discussion from our end. Now the next question, here you are required to tell me the name of the person. You can identify the person from the picture as well, that basically this particular person has claimed the silver medal in the women's section of FIDE World Blitz Chess Championship 2022. Now I really believe that after seeing this particular picture, you will really be able to identify the picture and the life will be easier for you to answer this question. Absolutely right, it is option C, that is Koneru Humpy. So Koneru Humpy is the right answer. All of you have given the right answer to the question number 35. Let's move on to the question number 36. So SEBI ने recently amend किया है Securities Contract Regulation Act 1956, जिसके तहत जो भी हमारी इंडियन स्टेट रन कंपनीज हैं, they will continue to be exempt from the minimum public shareholding. See guys, let me tell you that जितनी भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज थी, they were basically exempted from the minimum public shareholding norm. ठीक है, बट अब जो हमारी प्राइवेटाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी यहां पर इस एग्जाम्पशन लिस्ट में डाला गया है, उन्हें अलाउ किया गया है टू गेट द एग्जाम्पशन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो आपको ये बताना है कि इस नॉर्म के तहत the listed companies are required to maintain -% of public shareholding. What is exactly the right answer to this question? कि कितना परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग्स उनको मेंटेन करना होता है, that is what you are required to tell me, and the right answer is 25%. So you see guys, such kind of percentage questions, fact based questions आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। ऐसे जो फैक्ट्स है, परसेंटेजेस हैं, बिलियन डॉलर्स के अंदर आपकी वो है, जीडीपी का डेटा है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपके ऐसे इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। दैट्स व्हाई यू मस्ट बी रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so Ziliangrong community from which of the following states has recently been celebrated the Gangai festival? तो गानगाई फेस्टिवल को इस कम्युनिटी ने यहाँ पर रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, वो कौन सी स्टेट के अंदर मनाया जाता है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। द क्वेश्चन नंबर 37, a very easy question, you are just required to identify the name of the state and the right answer is Manipur. So Manipur is the right answer, absolutely right. So Priya, Annie, Nilesh, everybody has given the right answer. Shashwat has given the right answer, that is option B, Manipur. Now the next question, so which of the following banks has introduced the first of its kind digital solutions such as Insta EPC and trade APIs for exporters? तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो कौन सा बैंक है जिसने कि ऐसा पहला डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है Insta EPC और ट्रेड API which has been launched for exporters. Absolutely it is option D, that is ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं कि इस सर्विस के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करेगा बैंक। सो यू कैन गो थ्रू दैट on your own. Let us move on to the next question, and the next question is once again a very very important question. I am marking it star here because the question is, Captain Shiv Chauhan has become the first women officer. See guys, I'm repeating that, Captain Shiv Chauhan has become the first women officer to be deployed at Kumar Post. तो इनको कुमार पोस्ट पर डिप्लॉय किया गया है, और ये कुमार पोस्ट कौन सी जगह पर है ये आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कैप्टन शिव चौहान, as she has become the first women officer to be deployed in that particular part. Absolutely right, it is option C, that is Siachen Glacier. You can just see the picture of that for which we all are proud, really proud of her. So guys, that is what the right answer, that is Captain Shiv Chauhan has been posted in Siachen Glacier. Okay, now the next question is here on the screen and you are required to tell me that, see, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर बिंड स्कीम को। ठीक है, तो ये जो बिंड स्कीम है आपको मुझे बताना है व्हाट एग्जैक्टली एन स्टैंड्स फॉर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। इज इट नेचर, नेशन, नार्कोटिक, नेटवर्क और नन ऑफ द अबव? सो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। सो क्विकली टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डज एन स्टैंड्स फॉर इन द बिंड स्कीम? एंड एब्सोल्युटली it is basically option D, that is network. So when I talk about what exactly it states for, see,
बाइंड स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इसके आउटले की तो 25,039 crore rupees has been provided by the government as an outlay for the scheme and the timeline is up to a period of 2025-26। अब क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का एम? सी बेसिकली दे आर गोइंग टू मॉडर्नाइज किसको करने वाले हैं? जो हमारे एंटिटीज हैं विच आर बेसिकली बीइंग रन बाय द प्रसार भारती, दैट इज दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन को मॉडर्नाइज करने के लिए विच इज बीइंग रन बाय द प्रसार भारती, दैट इज आकाशवाणी, ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, दैट इज बिन द स्कीम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाउ इट इज नॉट इंडियाज फर्स्ट, इट हैज बिकम बेसिकली द वर्ल्ड्स फर्स्ट सच काइंड ऑफ म्यूजियम, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट palm leaf manuscript museum. So it has been opened in which of the following states and UTs? A very direct question, absolutely it is option C, that is Kerala। तो केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। प्रिया, एनी, नीलेश, everybody has given the right answer, that is option C, Kerala। Now the next question, IndusInd Bank has recently partnered with which of the following organizations to introduce a multi-branded credit card? तो यहाँ पर कुछ एयरवेज कंपनीज के साथ IndusInd Bank ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है so that they can launch and introduce their own multi-branded credit cards, and here guys the right answer is option D, that is both A and B, that is British Airways and Qatar Airways, जिसका इसका राइट आंसर है एब्सोल्युटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इंडिया का जीएसटी टैक्स रिसीप्ट इन दिसंबर 2022 रोज बाय व्हाट परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 1.49 लाख करोड़। तो 1.49 लाख करोड़ का इंडिया का जो जीएसटी टैक्स रिसीप्ट है ये इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से हुआ है? दैट इज व्हाट ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, and that is 15%। See guys, although this is a off the track question, but यहाँ पर ऐसी कोई जीएसटी की डेवलपमेंट और माइलस्टोन डेवलपमेंट जब आपके सामने होती है जस्ट बिफोर द एग्जाम, देन यू आर रियली रिक्वायर्ड टू कवर दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जीएसटी की एक माइलस्टोन अचीवमेंट थी यहाँ पर फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो उसके अंदर सॉरी द हाईएस्ट नंबर ऑफ कलेक्शंस, तो ऐसा ही कोई एक पर्टिकुलर माइलस्टोन था और पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि कौन से मंथ में बेसिकली जीएसटी ने इसको अचीव किया है। सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसरो ने रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है? द एम ऑफ दैट इज टू एम्पावर स्पेस टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ इसरो ने इसको किया है। और यहां पर सी apart from that the question can also come that you can basically in the exam it can be mentioned that ISRO, and the right answer will be given that these have joined hands to empower space tech startups in India, and the question can be about the chairman of ISRO who is presently serving as the chairman of ISRO। तो ऐसे भी questions आपको अपने आप से करने चाहिए whenever you see such kind of institutions in the news articles। तो ISRO की अगर हम बात करें तो Dr. K Sivan is basically serving as the chairman of ISRO right now, and when I talk about the right answer to this question guys, absolutely it is option B, that is Microsoft। So Microsoft is the right answer, Dr. K Sivan is the chairman of ISRO। Now moving on to the next question, so who among the following has become the first woman cricketer? So basically she has become the first cricketer to have a statue cast sculpture unveiled at Sydney cricket ground, and the picture of that particular player has also already been mentioned। She is basically a player from द कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से है ये बेसिकली हमारे प्लेयर्स, दैट इज दिस, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं, एब्सोल्युटली राइट, एंड सम पीपल आर सेइंग दैट ओके, सो यहां पर एस सोमनाथ, सो आई विल बी वेरीफाइंग इट गाइज, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। Now when I talk about the question number 45, let's focus on the question number 45। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो कौन सी वो प्लेयर है जिसके बेसिकली ये हमारा स्कल्पचर यहाँ पर डाला गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम द Australia, and here guys the right answer is option A, that is Belinda Clark। Okay, so Belinda Clark is the right answer to this question। Now moving on to the next question, as per the recent news, Dash will host India's first ABB FIA Formula E World Championship race in February 2023। तो February 2023 के अंदर बेसिकली इसको होस्ट करने वाला है। What is the name of that particular place that is going to host India's first ABB FIA Formula E? Absolutely right, it is option B, that is Hyderabad।
Hyderabad is the right answer. So all of you are giving the right answer to this particular question. Absolutely right. Now moving on to the next question. Union Ministry of Commerce and Industry has approved rupees 28.11 crore to extend the interest-free loan to Dash of Andhra Pradesh to overcome the damage caused by मांडुअस साइक्लोनिक रेन्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली इनमें से कौन से फार्मर्स हैं जिनके लिए ये अप्रूवल, लोन अप्रूवल एक्सटेंड किया गया ऑफ 28.11 करोड़ टू एक्सटेंड द इंटरेस्ट फ्री लोन टू सच काइंड ऑफ फार्मर्स. व्हाट इज द राइट आंसर? एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज टोबैको फार्मर्स के लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर्स. आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस गाइज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरल एटॉमिक्स हैज साइंड एन अग्रीमेंट. तो जब भी कोई अग्रीमेंट साइन होगा, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज अनदर party, or most of the times you can see that that party's name will be asked in the exam, and the second question which can come is it can be on the aim of that particular MOU. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि एक पार्टी है जनरल एटॉमिक्स, दूसरी पार्टी का नाम आपको बताना है, to manufacture main landing gear components, sub-assemblies and assemblies of remotely piloted aircrafts. Absolutely right guys, it is option E, that is Bharat Forge is the right answer. So Priya, Annie have given the right answer. Shashwat, Nilesh सभी ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर, that is option E, Bharat Forge. Now moving on to the next question. Hindustan Copper has signed an MOU at which of the following institutes organizations to enhance the copper ore production. So copper ore production को enhance करने के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर ने MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? That is what you are required to tell me in this comment section. Absolutely guys, it is option D, that is IIT Dhanbad, that is Indian Institute of Technology, Indian School of Mines Dhanbad. ठीक है, that is what the right answer to this question. And now we are moving towards the last question of our today's session, and that is here on the screen. And this question is really a very helpful question for all of you. The question is World Braille Day. तो वर्ल्ड ब्रेल डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने ये है. सो गाइज आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वर्ल्ड ब्रेल डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? And absolutely right, all the people are giving the right answer, that is 4th of January, and that is absolutely the right answer. So 4th of January is the right answer to this particular question. That is World Braille Day is being celebrated on 4th of January. So guys, that was the last question of our today's session, and now this is your time to tell me that what exactly your scores are. See, scores are really very important because it will help you to analyze that what exactly your strong areas are and what exactly your weak areas are. ठीक है, तो आपके strong areas कौन से हैं, आपके weak areas कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपके scores बताएंगे कि कौन से questions आपके basically गलत हुए हैं, कौन से questions सही हुए हैं. ठीक है, तो अपने scores आप सभी को comment करने होंगे comment section के अंदर. And now guys, if still you are new to our YouTube channel, kindly basically sign up and kindly subscribe to it, and you can also sign up and join our Telegram channel to get the latest PDF of all the sessions which we are taking on the YouTube channel. ठीक है, तो हमारे सारे PDFs आपको sessions के Telegram channel पे मिल सकते हैं. And now guys, this is basically, now you can basically ask me the queries if you are having any regarding this particular session, and you can also share the feedback in the mail as well as on the comment section. ठीक है, if you are having any queries, और अगर आप इस session को बाद में देख रहे हैं और आपके मन में कुछ query आती हैं about the session or about how to prepare the current affairs for the exam, what you can do, you can just comment it or you can share it on hello@edutab.co.in, and we can also call us at 8146207241. ठीक है जी, so this is basically the right answer is, and that was basically the whole session. So guys, now you can just ask me your queries. And Muskan is saying, sir, where in my plan can I get the current affairs info? So guys, see, मुस्कान सी, आपके कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स आपको तीन चीजों में प्रोवाइड किया जा रहा है. दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मैगजीन, वी आर हैविंग द रिपोर्ट्स टैब, वी आर हैविंग द स्कीम्स टैब. तो करंट टैब, रिपोर्ट्स टैब एंड स्कीम्स टैब आर द थ्री डॉक्यूमेंट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल such kind of pillars, because these three are basically the pillars जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं. Apart from that, we are also providing you the RBI notifications document as well, which is really very important from the exam point of view. ठीक है, और ये आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा in the current affairs section, so do not worry about it. And still, if you are just unable to find it, then you can just place your query on a mail by sharing it on mail, that is hello@edutab.co.in. Now I really believe that all of you have really
there are no more queries in the session. So absolutely, now when I talk about the scores here, so some people are having the score of 28, some are having the 15, some are having the score of 32, some are having the 46.25. Very good. So see guys, all the people who are having the score of more than 35, that is really very appreciable. और जिनका स्कोर कम है, सी आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको यहाँ पर see that basically means that you are having a basically a chance to learn from such kind of scores. आप देख सकते हो कि आपके वीक एरियाज क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है. स्ट्रॉन्ग एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, वीक एरियाज पर ज्यादा फोकस रखिए कि वो कौन सा डेटा है जो हमें याद नहीं रहता है, उसकी मल्टीपल रिविजन्स कीजिए. एंड नाउ यू विल सी that the next time when you will just participate in this session, then you are really going to ace this particular session by scoring even more than 45, 46, and you can even score 50 in this particular session. Okay, and I really believe that guys, this session was really helpful to all of you, and if you have really liked it, then you can just comment that particular part in the comment section. You can share that on mail as well. So I really believe that that was all from the whole session, and you are not having any kind of queries now, so we can conclude this particular session. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.